my name is Kevin. I'm from the UK. I'm really happy to take my new voice. My problem started when I was 12 years old. This will definitely motivate people who are suffering from similar situations. I have high pitch voice problem. तो अभी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वॉइस में काफ़ी फर्क आ रहा है. Okay. I actually had this surgery in the back and you said I'll take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. After surgery, I have vocal cord paralysis. And now I can speak normal. I feel good. Hi, I'm Cyrus. Hi, my name is Cyrus. Hi, I'm Chong. Now my voice has recovered and improved. इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम, मैं पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ. My name is Shiraldin from Warnell. And I'm very happy that I'm speaking like a normal people with a bass voice like male. So I'm having this voice problem. I spoke with a few of my friends and they found reasonable changes in my voices. I've been facing difficulty in speech. You are able to speak words properly and sentences properly. Just you try to say something. Treatment is there. After 2 hours I got my voice. Hello friends, welcome to our YouTube channel SLP Sanjay Kumar Voice Therapist, and today we are live with Mr. Aditya Kaul, and he's having dysphonia due to the unilateral vocal cord paralysis from last 1 month after the surgery, and he's not in India, so we'll be giving all the session by online voice therapy. And I'm in Bangalore, and by profession I'm a speech language pathologist and audiologist, and my area of interest is treating voice disorder. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट पर। और आज हम लाइव हैं ट्रीटमेंट से पहले आदित्य कौल जी के साथ, और इनको वॉइस की समस्या है, इनका एक वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हो गया है उसकी वजह से। और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं, और आज डेट है 11 दिसंबर 2021, और भविष्य में हम लोग ट्रीटमेंट के बाद भी लाइव होंगे। तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव भी जरूर देखिए। तो Aditya Kaul, unmute your mic and just tell about your problem, why you contacted us, where you stay. Tell about yourself. Yeah, so my name is Aditya Kaul. I stay in Dubai. I had a parathyroid surgery 1 month back, post which I have a right vocal cord paralysis post the surgery. So I contacted you for this therapy sessions for this. Okay, so what are the communication problem you're facing because of this problem? So the one is hoarseness of the voice. Next is I cannot speak long sentences together. I have to break my sentences into parts. So these are the two major problems. And I get tired after a long day of speaking. So these are some problems which I'm facing. तो थोड़ा सा आदित्य जी हिंदी में भी बात करते हैं। बताइए, आप बेसिकली इंडिया से कहाँ से हैं और दुबई में क्या करते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और मुझसे क्यों कांटेक्ट किया आपने, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में चर्चा कीजिए। मैं इंडिया में चंडीगढ़ से हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ और यहीं पे बैंक में जॉब करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम लास्ट 1 मंथ के बाद स्टार्ट हुई है, जब मेरी एक पैराथायराइड सर्जरी हुई थी, जिसके बाद मेरी वॉइस होर्स है और वॉइस थक जल्दी जाती है। मैंने आपके दूसरे YouTube वीडियोस देख के आपको कांटेक्ट किया इन होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय वॉइस। ठीक है, थैंक यू आदित्य। एंड इन दिस लाइव वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म, एंड देन व्हाई द वॉइस प्रॉब्लम आफ्टर द वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस ऑनलाइन वॉइस थेरेपी। So those who are watching this live, please be connected and we'll discuss all these points. So let's understand
first normal speech production mechanism, then it will be easier for us to understand the abnormal. For normal speech production, first thing is the thoughts that comes in the brain. Then we take air, that air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cord. Here we have larynx. Inside the larynx, we have two sting-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cord start moving like a string of a violin and guitar, and sounds generate. Then we modify that sound with the help of our articulators into different sound. For example, if you want to say p, both the lips are coming closer together and touching each other. When you want to say t, tongue is coming between the teeth. When you want to say k, back of the tongue is getting elevated. So lips, tongue, jaw, teeth, palate, these are known as articulators. So they help us to produce the specific sound. So when we say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cords move, sound generates, we modify that sound into different sound with the help of articulators. In one sentence, there are so many words. In each word, there are so many sounds. Each sound has own place, own manner of articulation. So it is little complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. So if coordination among these muscles goes, fluency goes. That can be seen in case of a stammering or a stuttering. If place of articulation is wrong, manner of articulation is wrong, the pronunciation problem will be there. For example, you may have seen some kids like they'll be saying for cat, they'll be saying tat, for ram, they will be saying lam. So these are the pronunciation problems. These are the main cause. Or place of articulation is wrong or manner of articulation is wrong, or sometimes pronunciation problem may be related to the hearing impairment also. So we do hearing evolution in that situation. And let's concentrate why you are having the voice problem. So as I told, here we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like structures known as vocal cords. So when we speak, we put air pressure below the vocal cord, and vocal cords start moving like a string of a violin and guitar, and sounds generate. So based on the ENT finding, your right vocal cord is paralyzed. So the nerve which supply to the vocal cord we call recurrent laryngeal nerve. It's part of the vagus nerves. So the nerve is a supply which has been damaged due to the surgery, during the surgery. So what is happening? Usually when we speak, say anything, or when we say for example, so both the vocal cords will come closer together. If I'm saying so both are coming closer together, very minute gap will be there and air will pass from that side. And now your right vocal cord is paralyzed. So what is happening when you are speaking? So right is not moving, left is coming, but right is not moving. So there is a gap is creating, that is called phonatory gap. Sometime when the vocal cords are normal, that time also phonatory gap will be there. But in vocal cord paralysis, there may be a bigger gap, and that phonatory gap will be there. So what we are going to do in voice therapy, and in fact we are going to do online voice therapy, either we will stimulate the right vocal cord and it may start moving. Sometime I have seen that in some patient, and there is a chances that right vocal cord will not move. So in that case, what will happen? Right is not moving, but right is not moving, so gap is there. So if we can bring the left vocal cord more closer towards the right one, so then also we can reduce the phonatory gap. And once the phonatory gap will reduce, the wastage of air will reduce, because for sound generation, the energy is coming with the air pressure, and now less air will be escaped from the gap. And then that air will be helping to vibrate vocal cord more effectively, and the amplitude of vibration of the vocal cord will increase, and finally loudness will improve, breathiness will reduce. So this is the biophysics behind the voice therapy, what we are going to do. और थोड़ा सा मैं भी हिंदी में भी बात करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को समझने के लिए और हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, फिर हम लोग एबनॉर्मल पे आएंगे। नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन के लिए जो पहला स्टेज है वो थॉट्स है, वो हमारे दिमाग में आते हैं। फिर हम सांस लेते हैं, हवा का प्रेशर जो है वोकल कॉर्ड्स के नीचे लगाते हैं, वोकल कॉर्ड्स पे मूवमेंट होता है, साउंड जनरेट होती है, फिर उस साउंड को हम लोग डिफरेंट साउंड में मॉडिफाई करते हैं अपने लिप्स, टंग, जॉ, टीथ, पैलेट के माध्यम से। जैसे कि अगर आपको प बोलना है तो लिप्स एक दूसरे के पास आती है, त बोलना है तो टंग दांतों के बीच में आती है, क बोलना है तो बैक ऑफ द टंग एलिवेट होता है। तो जब आप एक सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। थॉट्स आया, हमने सांस लिया, हवा का प्रेशर वोकल कॉर्ड्स के नीचे लगा, वोकल कॉर्ड्स में मूवमेंट हुआ, साउंड जनरेट हुआ, उस साउंड को हम लोग मॉडिफाई करते हैं डिफरेंट साउंड में अपने आर्टिकुलेटर्स के माध्यम से। और एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड में कई सारे साउंड है, हर एक साउंड का अपना एक प्लेस है, अपना एक मैनर है। तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमारे बॉडी के हंड्रेड्स ऑफ मसल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर इन सारे मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन
किसी भी रीजन से अफेक्टेड होता है तो स्पीच की फ्लुएंसी अफेक्टेड होती है, जैसा कि देखा गया है स्टैमरिंग के केस में। अब हम बात करते हैं आपके केस में। आपके केस में क्या हुआ है, सर्जरी के दौरान जो नर्व वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है वो डैमेज हुई है और उसके फलस्वरूप वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट अफेक्टेड हुआ है। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं राइट वोकल कॉर्ड आपका मूव नहीं कर पा रहा है, जो आपके वोकल कॉर्ड्स को जो नर्व सप्लाई करती है, रिकरेंट लैंजियल नर्व बोलते हैं हम लोग मेडिकल साइंस की भाषा में, और वो एक वेगस नर्व का पार्ट होता है। और वॉइस थेरेपी में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक वोकल कॉर्ड मूव नहीं कर रहा है, सपोज राइट वाला नहीं मूव कर रहा है, तो इसके बीच में दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक गैप जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फोनेटरी गैप। तो वॉइस थेरेपी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, राइट वाले वोकल कॉर्ड को या तो हमें स्टिमुलेट करके मूव कराना शुरू कर दें ताकि ये गैप कम हो जाए। ये जब मूव करेगा, बोलेंगे आप आ या कुछ भी बोलेंगे तो दोनों पास में आएंगी, तो फिर गैप कम हो जाएगा, हवा की बर्बादी कम होगी, फिर लाउडनेस जो है इंप्रूव होगा, आपकी ब्रीथनेस घटेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम राइट वाले वोकल कॉर्ड्स को मूव ना करा पाएं इवन आफ्टर वॉइस थेरेपी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग कि लेफ्ट वाले वोकल कॉर्ड को राइट के ज़्यादा करीब में लाएंगे, और फाइनली इस ऐसे सिचुएशन में भी दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों वोकल कॉर्ड के बीच का गैप, जिसको हम लोग फोनेटरी गैप बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो फोनेटरी गैप रिड्यूस होगा तो हवा की बर्बादी रुकेगी। तो जो हवा यूज होना है वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कराने के लिए वो मोर इफेक्टिवली यूज होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स का ज़्यादा होगा और फाइनली लाउडनेस बढ़ेगी और ब्रीथनेस घटेगा। और ये सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं ऑनलाइन वॉइस थेरेपी के माध्यम से। और कई बार बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं सर कितना टाइम लगेगा, मैं इस लाइव में नहीं बताने वाला हूँ, मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा और प्री पोस्ट वीडियोस मिलेंगे, और हर वीडियोस में मैं ट्रीटमेंट से पहले का डेट बोलता हूँ और ट्रीटमेंट का लास्ट डे में भी डेट बोलता हूँ, तो उससे पता कीजिए कि कितना टाइम लगता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। होप कि लाइव ठीक से जा रहा है, 9 लोग तो जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक ही जा रहा है, और अचानक हमने प्लान किया लाइव का। तो जो लोग भी जुड़े हैं मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट, and I am Sanjay Kumar. You can say SLP Sanjay Kumar. SLP means Speech Language Pathologist, and my area of interest is voice disorder treatment. And based on my graduation degree, which I did from AIIMS Delhi, I am an audiologist and a speech language pathologist both. But based on my post-graduation degree, I am a speech language pathologist. So, and I did my post-graduation from University of Mysore in the field of speech language pathology, and bachelor I did from the All Institute of Medical Science, New Delhi, in the speech and hearing science. और जो लोग भी जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स संदीप पांडे फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस। थैंक्स वेद फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस। संदीप पांडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग, एंड स्टार बॉय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। And let's discuss about, there are some questions. This live will stop at 5 p.m. because some patients are there for the appointments are there for treatment. So let's do for 8 minutes more. And Sandeep Pandey is saying hi sir. Hi Sandeep Pandey, thanks for joining and watching. Ved is saying hi sir. Hi Ved. Sandeep Pandey is saying sir मुझे स्टैमरिंग है, क्या ये ठीक हो सकता है, हमें कहाँ आना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संदीप पांडे ने लिखा कि क्या ठीक हो सकता है स्टैमरिंग के केस में। मेरे क्लिनिक में अभी तक कम्प्लीटली कोई भी ठीक नहीं हुआ है, तो फिर मेरे पास लोग आते क्यों हैं? पहले से बेहतर होने के लिए। तो स्टैमरिंग की स्पीच थेरेपी में हमने इंप्रूवमेंट देखा है लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं देखा है। हाँ, कुछ झोला छाप किस्म के लोग होंगे, बोलेंगे मुझे स्टैमरिंग थी, मैंने ठीक कर दिया, अब दूसरों का ठीक कर रहा हूँ, मैंने एक टेक्निक, अद्भुत टेक्निक ढूंढ ली है। तो ऐसे ठग लोग और झोला छाप किस्म के लोग हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। और जब भी आप स्पीच थेरेपी लें तो एक प्रोफेशनल से लेनी चाहिए। और स्टैमरिंग के केस में जो हमने अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट एफिकेसी देखा है 80% के आसपास देखा है। अगर 100 लोग मेरे क्लिनिक में ज्वाइन करते हैं स्टैमरिंग के स्पीच थेरेपी में, तो 80 लोगों को मैंने देखा है खुश होते हुए, 20 लोग सोचते हैं कि उन्होंने पैसे और टाइम की बर्बादी की। तो ये रहा हमारा एक्सपीरियंस हमारे क्लिनिक में स्टैमरिंग के ट्रीटमेंट के दौरान। और स्टार बॉय लिखते हैं सर मुझे प्यूबरफोनिया का ट्रीटमेंट चाहिए। तो स्टार बॉय प्लीज़ call us, we'll do the perceptual evaluation, and then accordingly we'll guide you. And for our contact number, please refer this live, and once you go to the description of this live, you will find our website, and click on website reach me. You'll find our email ID, contact number, and on the Google map where is clinic situated, all the details. So please call us. After the perceptual evaluation we'll be able to guide you in most effective way. And Subham Ellen likhte hain, hi Subham Ellen, thanks for joining and watching. And Surekha Nayak
is saying hi sir, hi Surekha Nayak, thanks for joining and watching. Subham Allen लिखते हैं ऑनलाइन थेरेपी चाहिए. तो Subham Allen, the information for you is you are a client for online therapy or offline. We will do first perceptual evaluation and then we'll just decide. तो सबसे पहले मैं आपका perceptual evaluation करूँगा और फिर उसके बाद डिसाइड करूँगा कि आप ऑनलाइन के लिए सुटेबल क्लाइंट्स हैं या ऑफलाइन के लिए हैं. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जब आप इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ज़रूर उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और हमें कांटेक्ट कीजिए. So thank you all for joining us and watching us. I think we have sufficient time. I thought 5 o'clock will be stopping, so still 6 minutes is there. So I was finishing latest fast. So if you want to know what kind of services we provide, please refer the description of this live, as well as you can refer the playlist of our YouTube channel, and our YouTube channel name is SLP Sanjay Kumar Voice Therapist. So once you explore our YouTube channel playlist, you will find playlist for the different communication disorder, and that communication disorder may include puberphonia, high pitch voice, vocal cord paralysis, phonatory gaps, sulcus vocalis, stammering, misarticulation, aphasia which happen after stroke, functional aphonia, functional dysphonia, spasmodic dysphonia. So you'll find the playlist, and even after doing hearing testing, and once we did the hearing aid, how the patient communication improves. So all those kind of video you will find, and that will help you to understand how a certified speech language pathologist and audiologist changes the life of people having communication disorder. I always use word certified. Certified means jhola chhap nahi. There are so many people, there are products of the social media or jhola chhap. So you should be aware of that. And whenever you're going to take speech therapy or audiological services, try to find your audiologist and speech language pathologist where he has studied, what degree he has. He has graduation degree or post-graduation degree. In US, like countries, to practice as a speech language pathologist, you should have master degree. But if you are in India, even bachelor degree से भी काम चल जाएगा. तो US में अगर है तो मास्टर डिग्री एटलीस्ट होना ही चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए. तो आप उसके डिग्री के बारे में पता कीजिए कि कहाँ से क्या डिग्री है उसके पास, कौन से ईयर में उन्होंने डिग्री प्राप्त किया और कौन से यूनिवर्सिटी से उनका कॉलेज एफिलिएटेड था, और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. इन सारी जानकारियों के पीछे पड़िए. झोला छाप होंगे तो इन सारी जानकारियों को अपने सोशल मीडिया के अबाउट सेक्शन में बिल्कुल ही नहीं डालेंगे. और अगर कहीं ABCD कुछ डिग्री डाल भी दिया तो कॉलेज का नाम नहीं बताएगा, फिर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताएगा, कौन से ईयर में प्राप्त किया वो सब नहीं बताएगा. तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं झोला छाप और असली स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट में. तो ये मेरी कोशिश रहती है अवेयरनेस क्रिएट करने की. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस. और लास्ट में एक बार आदित्य कौल जी आप अपनी आवाज़ सुना दीजिए. जस्ट टेल अबाउट योर प्रॉब्लम, व्हाई यू कॉन्टेक्टेड अस. So I had a surgery 1 month back. मेरी एक सर्जरी हुई है 1 महीने पहले, जिसके बाद मेरी आवाज़ होर्स हो गई है, मेरी वॉइस में टायरिंग है. My voice is hoarse and there is tiring and I cannot speak, and that's why I contacted you. Okay, thank you so much, Aditya, and helping me to create awareness about the communication disorder by this kind of live. Thank you so much, and thank you all for joining us and watching us. Thank you all, love you all, and we'll stop this live now.